welcome to the next part of the video. In yesterday's video, we saw what was the terminologies behind the lines and angles, and we saw the theorem. The first theorem was the vertically opposite angles are equal. So we used to say the vertically opposite angles are equal. तो हम वो सब चीज़ों के ऊपर आज sums देखने वाले हैं. So let's start with the problems. So the first problem is the equation is given and we need to find x. We need to find x. So let this is O, A and B. क्या मैं बोल सकती हूँ A O B एक लाइन है? A O B is a line. If it is a line, I can say, and that to a parallel line, a straight line. So 45 degree plus x. This is the angle 1 and this is angle 2. Will give you 180 degree. What we need to find? हमको find करना है x. तो x would be nothing 180 degree minus 45 degree. 180 degree minus 45 degree will give you 135 degrees. So the value of x comes out to be 135. So these were the simple sums which we have. तो यहाँ पे क्या लगाना है डायरेक्टली, एंड यहाँ पे जब भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो. सो वी आर यूजिंग लीनियर पेयर ओवर हियर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. अब इस सम में क्या करना है, a एंड b दोनों अननोन दिए हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट a एंड b if the condition is given as a minus b is equals to 80 degree. अगर a minus b 80 डिग्री है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि a plus b will be nothing but 180 degree? A plus b is nothing but 180 degree because of linear pair, and it is given in the question a minus b is nothing but 80 degree. अगर मैं दोनों को add कर दूं, if I add them, add both the equation, so b will get eliminated. अगर b eliminate हो गया, so मेरे को यहाँ पे मिलेगा a plus a will give me 2a and 180 plus 80 will give me how much? 260. So the value of a comes out to be 130. If you put this value of a in any one of the equation, you will get the equation answer for b. Suppose I put in this 130 minus b is equals to 80 degree. Minus b is equals to 80 minus 130 will give us minus 50. Minus b is equals to minus 50. The answer for b comes out to be 50. So the value for b is 50 and the value for a is 130 degree. Let's see more sums. Now let us see the sum. This is the diagram given. Given in the question is angle AOC plus angle BOE कितना है 70 degree है. Angle AOC plus angle BOE, these two, the sum of these two angles are given as 70 degree. And BOD, angle BOD is given as 40 degree. तो क्या 40 दिया है? ये वाला 40 degree दिया है. And angle BOE, find angle BOE. What is BOE? BOE is nothing but BOE. ये वाला angle find करना है. And the reflex angle of COE. COE का reflex कौन सा होगा? ये पूरा. तो let's see पहले हम BOE कैसे find कर सकते हैं. So can we say like that? So AOB is a line. AOB is a line. We can say that. Let us name this angle. इसको 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 and this angle be 4. इस एंगल को मान लेते हैं 4. So लिखनेंगे कैसे? एंगल 1, ये तीनों एंगल मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 will gives you 180 डिग्री. Which property? Linear pair property. Linear pair property यूज करके हमको ये डेफिनेशन मिली. क्या मेरा एंगल AOC? एंगल AOC is nothing but angle 1 plus BOE is nothing but angle 3. Is nothing but given in the question 70 degree, which is given in the question. Need to write the reason what is there. Is it given or are you applying any of the theorem or the properties? Now angle BOD is also given. ठीक है. Angle 1 plus angle 3 दिया है. क्या मैं इसको rearrange करके ऐसे लिख सकती हूँ? Angle 1 plus angle 3 plus angle 2 will gives you 180 degree. And I know angle 1 plus angle 3 is nothing but 70 degree. 70 degree plus angle 2 is equals to 180 degree. So angle 2 is nothing but 180 degree minus 70 degree, which comes out to be 110 degrees. So angle 2 is nothing but COE. Angle COE हमको कितना मिल गया? 110 degrees. 110 degrees. But हमको पूछा क्या है? हमको angle 3 पूछा है. अब क्या मैं बोल सकती हूँ COD भी एक लाइन है. COD is a line. If COD is a line, so can I say like that? Angle 2 plus angle 3 plus angle 4 will make 180 degree by linear pair. Angle 2 plus angle 3 plus angle 4 will make 180 degree by
लीनियर पेयर। अगर ये 180 डिग्री बनाएगा एंड वी नो हमारा एंगल 2 कितना है 110 एंड एंगल 4 इज नथिंग बट 40 डिग्री। सो कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ एंगल 2 110 प्लस एंगल 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल 4 इज नथिंग बट 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टेक ऑल द कांस्टेंट्स ओवर देयर, तो यहाँ पे बचेगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 माइनस 40 डिग्री excuse me, which gives you 180 minus 110 is nothing but 70. 70 minus 40 will give you 30. So answer for angle 3, this comes out to be 30 degree. It comes out to be 30 degree. The reflex angle of COE. COE का reflex मतलब कि angle 2 का reflex पूछ रहे हैं। किसका reflex पूछ रहे हैं? angle 2 का reflex पूछ रहे हैं। So how we will take out the reflex angle of angle 2 angle 2. So this is nothing but, अगर मैं दूसरे पेन से बनाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये वाला जो एंगल है ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। सो व्हाट आई कैन राइट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल 2 इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस एंगल 2, 360 डिग्री माइनस एंगल 2, एंड इफ इट इज 360 डिग्री माइनस एंगल 2 is nothing but 110 degree. 110 minus 360 minus 110 will give you 250 degrees. So the reflex angle of angle 2 is nothing but 250 degree. I hope such type of sums must be clear. Let's see more sums. Now let us see, if an angle is 28 degree less than its complement, find the measure of the angle. Find the measure of the angle. तो ऐसे sums को हम कैसे solve करते हैं देखेंगे इधर. Let the angle be, एंगल को मान लेते हैं x. Let the angle be x. We will take angle as x. But बोला गया है if an angle is 28 degree less than its complement. Complementary angles कौन से angles होते हैं? Complementary angles are what? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि complementary angles are nothing but दोनों एंगल का अगर सम कर दूं तो it should give me 90 degree. It should give me 90 degree. But we have let the angle to be x. So the complement angle for my case will be, complement angle is angle 28 degree less than complement, that is x minus 28. X minus 28. So one of the angle is x and another of the angle is x minus 28. Complementary है मतलब दोनों angles को अगर add करूँगी तो वो हमको कितना सम देगा? 90. So I can treat like this, this x is nothing but theta 1 and this is nothing but theta 2. So if I add them, they are going to give me 90. So it will be x plus x minus 28 gives out to be 90. So can I say this is nothing but 2x minus, and I take constant that side, it will be 90 plus 28. So 2x is nothing but 90 plus 28 will give you 118. So x comes out to be 118 divided by 2, which comes out to be 559 degrees. So the angle x which has been taken is nothing but 59 degrees, which is less than the angle is 28 degrees less than its complement. I hope such a type of sum must be clear. And अगर complement angle निकालने को बोला गया तो complement angle is nothing but x minus, that is 59 minus 28, and 59 minus 28 gives you 31 degrees. 31 degrees. So this is the way when we solve such type of problems. हो सकता था इधर कुछ और एंगल होता and here they would have taken supplementary, and supplementary देते तो यहाँ पे जो एंगल होता दोनों का सम मिला करके हो जाता 180 डिग्री, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसका फंडामेंटल हम लोग इधर यूज करके ही ऐसा हमको सॉल्व कर रहे हैं. आई होप सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियर. नाउ लेट अस सी. This is a proof. Angle ROS we need to prove is half of angle QOS minus angle POS. This is one of the favorite question from an NCERT book. Now let us see कि हमको क्या दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है. So what you can see is it is given in the question angle ROQ 90 डिग्री है. ये 90 है तो angle ROP भी 90 है. So angle ROQ is nothing but 90 डिग्री and 90 डिग्री एंगल ROP भी 90 डिग्री है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे?
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ROQ, एंगल ROQ will be equal to angle ROP. So both the angles will be equal. Now let's see, can we write angle ROS को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है? ROS ही प्रूफ करना है ना. So ROS को can we write it like that? Angle ROP minus angle SOP. अगर ये पूरे एंगल में से मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? ये वाला एंगल. That's what we want. So angle ROS is nothing but angle ROP minus angle SOP. Now in place of, now I can write ROS. अच्छा, angle ROP is nothing but this. क्या मैं ROP की जगह पर ROQ लिख सकती हूँ? This can be written as angle ROQ minus angle SOP minus angle SOP. Now you can say what we need to do is, अभी यहाँ पे एक additional step होगा. Adding, what the additional step will be? Adding, ऐसा क्या ऐड करेंगे जो यहाँ पर 2 आ जाए. So if I add angle ROS on both the sides, so it will become twice ROS. And जब मैं वो लेके जाऊंगी इस साइड पे तो वो डिनोमिनेटर में जाकर के मेरे को हाफ देगा. So it will be adding angle ROS on both sides. हम कभी भी एंगल एक साइड पे नहीं ऐड करेंगे. On both the side we need to add the angles. So adding ROS on both the sides will give me like this. Angle ROS plus angle ROS gives me angle ROQ minus angle SOP plus angle ROS. I hope this step must be important. Clear. यही एक important step है पूरे सम में. क्या मैं ये बोल सकती हूँ angle ROS gives me twice angle ROS? And if it is twice angle ROS, here we have angle ROQ is nothing but ROQ. And angle SOR, ROS. अगर यदि मैं ये पूरा एंगल एक साथ लिखना चाहूँ, if I combine these two, if I write the statement like this, plus angle ROS minus angle SOP. Let's see, here though we have twice of angle ROS. Leave this like that. Angle ROQ plus angle ROS. ROQ plus angle ROS. ये दोनों को मिला करके क्या मैं एंगल QOS लिख सकती हूँ? Angle QOS. Angle QOS is nothing but the whole angle. If this angle QOS minus angle SOP. Angle SOP, now can I say angle ROS is nothing but half of angle QOS. इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, angle POS. Can you match the results? What was given to prove has been proved. Hence proved. So I hope the question must be clear. It is very easy, but एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हमको angle ROS अगर यदि ऐड कर देंगे तो हमको easily 2 मिल जाएगा. So this is a short sum but tricky. I hope this must be clear. Now let's see such a kind of a question. फिगर दिया है आपको, प्रूफ करना है कि एंगल ROS प्लस SOT, मतलब कि ये पूरा एंगल, दिस फुल एंगल is nothing but is equals to 90 degree. Anywhere around this is ROT which is will be equal to along 90 degree. ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल मिला करके हमको 90 डिग्री आते हैं. Once of all I will name the angle. Let be 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन में दिया है कि 1 and 2 इक्वल है, 3 and 4 इक्वल है. So जैसे मैंने बोला सबसे पहले लिखेंगे कि हमको गिवन क्या दिया है. Given is angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. Make a habit. What we need to prove is, we need to prove angle ROS plus angle SOT should be equal to 90 degree. Should be equal to 90 degree. So let's see how we can prove this. So the proof of the question is, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल POS प्लस एंगल SOQ 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि POQ is a line. And with the help of a linear pair, we can say angle POS, which is nothing but this angle plus this angle plus angle SOQ will make 180 degree by linear pair. This is very important as to write all the time which property has been used to prove it as 180 degree. So angle POS plus angle SOQ is nothing but 180 degree. क्या मैं ये वाले एंगल को तोड़ करके ऐसा लिख सकती हूँ? एंगल POS को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्योंकि ये पूरा एंगल किससे बना है?
1 और 2 से, और ये पूरा एंगल किससे बना है 3 and 4 से. So that's what I have written, angle 1 plus angle 2 plus this, इसको तोड़ा तो angle 3 plus angle 4. Can I say that angle 1 plus angle 2, angle 1 angle 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह पे क्या मैं 2 लिख सकती हूँ. Plus can I write in place of 4 angle 3. Why I am not writing angle 4 in place of angle 3? Because क्योंकि मेरे को proof में ROT चाहिए, and ROT, angle ROT is nothing but this 90 degree is nothing but angle 2 plus angle 3. तो मेरे को proof में 2 and 3 चाहिए, इसीलिए मैं 2 and 3 के terms में लिख रही हूँ. 1 and 4 के terms में चाहिए होता तो I would have written in terms of 1 and 4. Now angle 2 plus angle 2 will give me twice of angle 2 plus this is equals to 180 degree. Twice of angle 3 is equals to 180 degree. Can I take 2 common from this equation? So the equation becomes angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. So angle 2 plus angle 3 gives me 90 degree. So that's what I need to prove. Angle 2 plus angle 3 90 degree चाहिए था. In short, I can write it like this. Angle 2 is nothing but ROS. So angle ROS plus angle 3 is nothing but SOT. So angle SOT gives me 90 degree, which is nothing but angle ROT. So this was the proof which was asked in the question. I hope it must be clear. By using linear pair, we have proved this one. Now let's see this kind of a question. बोला है find क्या करना है angle PYQ. PYQ is which angle? PYQ is this angle. We need to find this angle. Angle XYQ. Angle X, Y and Q is this whole angle. Is this whole angle. And given in the question is let this angle be 1 and let this angle be 2. Angle 1 and angle 2 are equal. जब ऐसी साइन बन के आए मतलब ये दोनों angles equal हैं. So what is given in the question? First we will write what is given in the question. So what is given? Given is angle XYZ. Angle XYZ कितना दिया है 64 degree. It is given in the question. Let this angle be 3. इसको 3 मान लेते हैं. 1 2 3 के टर्म्स में रखते हैं तो एंगल बोलना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग 1 2 3 के टर्म्स में उसको ले लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट एंगल 3. बट जो भी एंगल आप ले रहे हो उसको मेंशन करो बस. सो यू कैन टेक एनी एंगल. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव or what we need to find. Not we need not to prove here, we need to find here. What we need to find? Angle PYQ. What is angle PYQ? Is nothing but angle 1. We need to find angle 1. Then we need to find XYQ. Angle XYQ. Angle XYQ is nothing but angle 2 plus angle 3. Is nothing but angle 2 plus angle 3. Angle 3 तो हमको already दिया हुआ है. Angle 2 अगर हमको मिल जाता है, so we can add them and we can find angle XYQ. Now we need to find reflex of angle QYP. QYP का reflex. QYP का reflex is nothing but this angle. This angle. So it will be nothing but 360 degree minus angle 1. Angle किसका QYP का चाहिए ना, angle 1 का reflex चाहिए तो angle 1 का reflex will be 360 minus that angle. So 360 minus angle 1. So let's see, we will find it out. So solution for the question is, now can we say angle 1 plus angle 2 plus angle 3 makes the linear pair? Yes, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is nothing but equal to 180 degree by linear pair. Linear pair की हेल्प से ये तीनों कैसे हैं 180 डिग्री. क्या मैं angle 1 की जगह पर angle 2 लिख सकती हूँ? Because it is given in the question, we have not written it down. Angle 1 is equals to angle 2, ये भी question में दिया हुआ है. So angle 1 की जगह पर I can write angle 2. If I write angle 2 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. Angle 2 plus angle 2 will give me twice of angle 2 plus angle 3 is nothing but 64 is equals to 180 degree. So what is the answer is twice of angle 2 is equals to 180 degree minus 64. Minus 64. So twice of angle 2 gives me 180 degree minus 64 gives me 114. 114 degree. So angle 2 comes out to be 114 divided by 2 which will be 58 degrees. So angle 2 कितना निकल के आ गया? Angle 2 is 58. अगर angle 2 मालूम पड़ गया है 58 डिग्री है तो angle 1 भी कितना होगा? 58 क्योंकि दोनों ही angles equal हैं. Now let us see कि हमको क्या क्या निकालना था. Angle 1 निकालना था, हमने निकाल लिया. Angle XYQ निकालना था. Angle XYQ is nothing but angle 2 plus angle 3.
Angle 2 is nothing but 58 degree plus 64 degree. Gives you how much? 122. So the answer for XYQ is 122 degrees. So this two combined angle is done. What is remaining? Reflex angle QYP. Reflex angle QYP कैसे निकालेंगे? 360. Reflex angle QYP is nothing but 360 minus angle 1. What is angle 1? 58 degrees. So when you subtract 360 minus 58, you will get 302. So answer for the reflex angle QYP is 302 degrees. So these are the three answers, 122 and 58 and 302 for the respective questions which has been asked in the question. I hope such types of problems must be clear to you. We have used the linear pair property to solve all such kinds of problems. In further videos, we will be seeing the number of theorems which we have in this chapter and how to solve the sums by using that theorems. So for today, that's it. Have a nice day, and I hope you must have liked the content. Thank you and have a nice day. And if you like the content, please share and subscribe.